Hello students, welcome to my channel. Today we can study a new concept of continuity of a function. Up to the last lecture, in the last lecture we are completed definition of continuous function and definition of discontinuous function. Which function that is a continuous and which function that is discontinuous, and some basic concepts to solve the examples of multiple choice questions. We are completed that part up to the last video. Now today we can study next part of continuity of a function, and that is here written on blackboard. See, types of discontinuous function. Discontinuous function के दो types होते हैं. फर्स्ट टाइप क्या लिखा है यहाँ पे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एंड सेकंड टाइप जंप डिसकंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन पे दो प्रॉब्लम्स रहते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ एग्जाम्पल कंटेनिंग इक्वल टू साइन, and that is of which type, equality problem. If example containing less than and greater than, and that type example is called inequality. Now our main problem here, today's part, which main part we have to study two types of the example, that is removable discontinuity type and jump discontinuity type. Now when we can say that the given function is discontinuous and that is of removable, and if suppose function is discontinuous, that is of jump discontinuity, we can study that part by taking actual example. but इसमें फर्स्ट पार्ट में लिखा है मैंने, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है. इफ गिवन एग्जांपल दैट इज ऑफ विच टाइप वी डोंट नो. इफ सपोज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन as x tends to that value, if that is not equal to value of the function, then we can say that discontinuous function it is, and that is of which type, removable. एग्जाम्पल लेने के बाद समझ में आएगा. और इनइक्वालिटी एग्जाम्पल में लेस देन और ग्रेटर देन रहा तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सा टाइप का है, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका लेफ्ट लिमिट लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड लिमिट लेना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफरेंट आ रहा है. उस टाइप का जो एग्जांपल रहता है एक्चुअली वो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है, वो कौन सा टाइप का होगा, रिमूवेबल. नाउ जंप मीन्स व्हाट, if in inequality type problem, if example containing inequality means what, less than greater than, to check that function is discontinuous no doubt, but which type it is, jump कैसा चेक करना है, उसमें क्या होना चाहिए, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ओनली दोज answers are not equal, then we can say that discontinuity type, which type it is, jump discontinuity. Now it is understood by taking some MCQs. See first example, यहाँ पे जो first example लिखा है इक्वालिटी टाइप के, इसमें क्या है, इक्वल टू साइन है. सी केयरफुली, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 3 and it is equal to 10 for x equal to 3. Now is this function is discontinuous, and if it is discontinuous, that is of which type, we have to check. पर क्या करता हूं मैं, इक्वालिटी प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट चेक करना है हमें, फर्स्ट पार्ट है कि सेकंड पार्ट है, इसलिए फंक्शन जो लिखा है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, हमें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चेक करना है. डिसकंटिन्यूस है क्योंकि इस पार्ट पे ही अभी स्टडी चल रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, मैं क्या करता हूं, इसका लिमिट लेता हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू at x equal to 3 means take x tends to 3, x square minus 9 upon x minus 3. Now using the method x tends to 3, either L'Hospital or directly factorization, x plus 3 और x minus 3 न्यूमरेटर, लिमिट लेता हूँ मैं फर्स्ट में, x minus 3 गेट कैंसल, और x के जगह 3 रिप्लेस करने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 plus 3 6 आ रहा है. Here limiting value of function x tends to a, it is 6. Now value of the function it is given, that is f of 3, it is equal to 10, it is given.
इसमें क्या हो रहा है, लिमिटिंग वैल्यू 6 आ रहा है और f3 ऑलरेडी 10 गिवन इट इज, मींस दिस कंडीशन कंटिन्यूअस फंक्शन का कंडीशन फेल हुआ, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f of x tends to a, it is not equal to value of the function. This condition fails means function is discontinuous, that is of which type, removable. Therefore then fx is of which type, it is removable discontinuous function. First example हुआ. Now see the second example. सेकंड एग्जांपल और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट में वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन, बट सेकंड में वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट गिवन. इफ इन द एग्जांपल इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन, देन check this condition, and if both are not equal, then we can say that that example is of removable discontinuous. Now if suppose if f of x equal to x square minus 1 upon x minus 1 has which type of discontinuity at x equal to 1, इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं है, this example में value of the function is not given, it is missing, then without solving that example we can say that that discontinuity of which type, it is removable. विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. फिर से बताता हूं मैं, दिस एग्जांपल में फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों है, इसके लिए सिर्फ वैल्यू कंडीशन चेक करना है. दिस एग्जांपल में सिर्फ फंक्शन है, उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. दिस एग्जांपल इज ऑफ डायरेक्टली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बिकॉज वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मिसिंग. In some example, value of the function missing given. In some example, value of the function directly already given. Now see the difference between. Now first and second, these two examples is of which type? Removable. Now one more example. That of equality हुआ. अभी inequality में देखो. Third example में क्या दिया है? Example नहीं है. Left hand limit is 4. Right hand limit is 4. But value of the function is 7. इसका मीनिंग क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट इज 4, राइट हैंड लिमिट इज 4. एग्जांपल डायरेक्ट आंसर दिया इसमें, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पे. नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल एग्जांपल लेंगे इसका. लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, इसमें 4 है, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या दिए है, 4 दिए है. बट एफ ए का जो वैल्यू है, एफ ए का वैल्यू 7. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ए, मीन्स दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. इफ इन इनइक्वालिटी, बिकॉज दिस इज ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट मीन्स व्हाट? इनइक्वालिटी. दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, therefore this example it is removable discontinuity. If in inequality type problem, left hand limit, right hand limit both are equal, but it is not equal to value of the function, then we can say that that type example is of removable discontinuous function type. Now this first, second and third that are of removable. Now we can see fourth example. Fourth example में लेस देन और ग्रेटर देन साइन और इक्वल टू भी है. इसमें चेक कर क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लाइन ध्यान में रखो, बीच में कौन सा, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन x इक्वल टू 0, और 0 का लेफ्ट हैंड साइड x टेंड्स टू 0 माइनस, और राइट हैंड साइड x टेंड्स टू 0 प्लस. और इस पार्ट में फंक्शन कौन सा है, लेस देन का फंक्शन देखो, लेस देन 2x प्लस 1 यहाँ पे, और इस पार्ट में जो दूसरा फंक्शन कौन सा है, x प्लस 3. नाउ हियर इन ऑर्डर टू चेक दिस एग्जांपल इज ऑफ रिमूवेबल और जंप डिसकंटिन्यूटी आउट ऑफ दिस टू. फर्स्ट ऑफ ऑल इन इनइक्वालिटी टाइप प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट. हाउ टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 का लेफ्ट पार्ट में कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, पर 0 प्लस मीन्स और राइट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है एग्जांपल में, x प्लस 3, दोनों में वैल्यू रिप्लेस करता हूं, 2 इंटू 0 प्लस 1 इट इज 1 एंड 0 प्लस 3 इट इज 3। इसका मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस एग्जांपल में लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल, we cannot check value of the function in that example. We can say that directly it is of this type, jump discontinuity is of which type, this is discontinuity, jump type. See carefully. Now see fifth example, you know fourth example complete हुआ है, fifth example में देखो fx equal to 2 directly, fx equal to 2 directly, x less than 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2 दिया है डायरेक्टली। लास्ट एग्जांपल ऑफ विच टाइप वी हैव टू चेक इट हियर, लेफ्ट हैंड लिमिट, सी केयरफुली, लास्ट एग्जांपल x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस whatever may be the function here, that is directly given 2, and right hand limit x tends to 1 plus function here, its answer is given, function is not given, its answer is given। इसमें क्या हो रहा है, दोनों डिफरेंट आ रहा है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट वैल्यू है, इसलिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, जंप डिसकंटिन्यूटी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। नाउ क्वेश्चन में देखो क्या है, now this function is of which type, it is jump discontinuity। See carefully, to solve the MCQ example that are of continuous function, discontinuous function and type of the discontinuity, either it is removable or jump discontinuity, solve that example, before that you study this basic part first। पर एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने हार्ड टाइप एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।